Let's go then. Not gonna lie, it's been a while. I'm a little nervous, a little bit. Let's see. Okay, so I'm gonna get a lot of backlash for this, with half the Indian incel population sitting in my DMs, infesting them with murder and rape threats. So let's go. I suppose if I put on a Haryanvi accent and start swearing left and right in my videos, then I would probably also have like 8 million subscribers or something. But we're not going for that. So this is going to be a bit of a touchy topic, especially if you're a cis-het Indian upper caste 12-year-old. But okay. Ever since there's been a rise of Indian YouTubers, some have started to gain popularity, questionably so. Have you seen the kind of content they make? Like, the fuck kind of content are people consuming these days? Please stop making stupid people famous, yaar. Anyway, in almost all Indian popular YouTube videos, I've seen a trend, and a rather dangerous one at that. That's right-wing populism. Right-wing populism and people who are right-wing in their political outlook are usually people who support economic or social conservatism. In other words, someone who is right-wing usually supports tradition and the way things are and wants to go back to the way things used to be. एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि क्या वो लड़की हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति समझ पाएगी? क्या ये लड़की हमारी रीति रिवाज समझ पाएगी? क्या ये लड़की हमारे कायदे, हमारे उसूलों को समझ पाएगी? क्या वो इस परिवार की परंपरा का पालन कर पाएगी? क्या वो? For more clarity, let's start with highlighting the characteristics of right-wing populism, especially in the Indian context. Homophobia. This one absolutely comes as no surprise to anybody. See one video by an Indian YouTuber and you will hear 20 queer-phobic slurs per minute. मतलब तड़का मार के queer-phobic slurs होते हैं उनके वीडियो में. फिर छक्कों के होश उड़ गए. कहता हूँ भगवान ने जो बना के भेजा भाई वही बन के रहो. मुझे लगता है मुझे कोई एंटी बकचोदी स्क्वाड बनाना पड़ेगा इन लोगों के चुत्तड़ पीटने के लिए. ऐसे तो धरती पे लड़के लड़कों से लग जाएंगे, लड़की लड़कियों से लग जाएंगी. भाई इंसान का वंश खत्म हो जाएगा. भाई कहाँ से पैदा होंगे? लड़कियों को करना चाहिए, लड़के कर रहे हैं तो लड़कियों को करना चाहिए, लड़कियां कर रही हैं. इसको टिकटॉक की बोलते हैं, इसको लिंक बदलो ऐप बोल दो ना. Turn your cock into pussy within 2 seconds with a brand new link बदलो. फील करने की बंद कर दो ये ऐप, वरना आधे तो देश के लोग मिठ्ठे हो जाएंगे या फिर नंगा मुजरा करेंगे इस एप्लीकेशन से. लड़का छकैत हो जाता है, उसका गायब हो जाता है, और छक्का सुनने में अपने आप को छक्का छुक्की और गाली खाने में माँ दी की मजा आ रहा है. इस पर टिकटॉक पर पूरा देश ने तुम्हें छक्का घोषित कर. आउट वाला छक्का कौन बोला? छक्का कौन बोला? भाई को, भाई को कोई छक्का नहीं कहने का. भाई ये टिकटॉक का मिठा आदमी. लोगों को ना, जितने भी नंगे नाचने वाले और जितने भी टिकटॉक के गे हैं, उनको हम अलग ही कंट्री में डाल देंगे. उस कंट्री का नाम रखेंगे हम द टिकटॉक लिंक परिवर्तित कंट्री. और वहीं पे ही सब तुम ये सारी बकचोदी करना, फिर अपने मिल मिल के नंगे नाचना, खूब सारा मुजरा. तुम जब हकते हो तो इंद्रधनुष निकलता है ना. चल ठीक है यार, टिकटॉक परियों का शहर, यूट्यूब शैतान का घर. साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा. नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, इन जैसों का ना एक अलग से देश बना देना चाहिए, द मिठा देश. कम से कम हम लड़कों का नाम तो नहीं खराब होगा ना. हाँ भाई, देख लो अपने देश में एक नई प्रजाति आई है. नहीं साला इसके घर वाले कितने खुश होंगे. बोला होगा हमारा बेटा हुआ है, नाम रोशन करेगा. ये साला अपना जिस्म बेच रहा है यहाँ पे इंटरनेट पे. डॉक्टर ने बोला होगा मुबारक हो लड़का हुआ है, लेकिन ये तो असली में मिठी मिठी चाशनी निकला. मिठी मिठी चाशनी. बढ़िया गाना था वैसे. थैंक यू सो मच. चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं. In fact, when Carrie Minotti was called out for it, he went ahead to play the victim and cry about how terrible everyone is for misunderstanding him. Boo fucking who? Seriously. In serio, Gigi? Like, the dude actually wrote out a non-apology, and there were people, Indian YouTubers in the comments, talking about how brave and strong he is. Like, seriously, dude is using queerphobic slurs and does not even have the decency to apologize to the queer community. We're not having it. I'm here to tell you right now,
We don't care. Let me tell you something. We don't care. Jerry. Carrie, unfortunately, is not the only one. There's plenty out there who follow the same formula. Castism. It doesn't end there. In fact, that's just the beginning. These people are also vehemently casteist with the way they throw around caste slurs. पंचर जोड़ने वाली ऑडियंस। हमारी छपरी की ना भाई मैं कीले निकाल सकूं। भाई मेरी गाड़ी चाबी से चलती है, तुम्हारे वहाँ की तरह तार वार जोड़ के नहीं चलती। मेरे को पता है छपरी में ये सब नॉर्मल होगा, तार जोड़ के गाड़ी चुरा लेना। भाई इन छपरियों पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। Now, I don't know if these people are aware that these words are slurs or are using it unknowingly. Whatever it is still casteist. You know, there are right-wingers who are openly casteist and legitimize the existence of the Varna system or the caste system by citing religious scriptures. Then there are right-wingers like these idiots who absolutely deny the existence of caste system. जब जो रेप करता है वो ये नहीं देखता कि इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है। मैं तो ये सब चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं देखता कि दलित का रेप हुआ है, पंडित का रेप हुआ है। रेप हुआ है ना, रेप होता है, उसको किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ते। और जो ये दलित लाइफ मैटर का बोर्ड लगा के बैठे हैं ना, ये जो खुद बोलते हैं ना कि हम तो जातिवाद के खिलाफ, बहन जो ये क्या है फिर? ये जातिवाद नहीं कर रहेगा तुम कि दलित लाइफ तो गाली बकने का मन कर रहा है, ये कैसा बंदा है, देखो इसमें भी जाति घुस। अबे बहन जो जाति मैं घुसेड़ रहा हूँ, बहन के लोड़ो तुम घुसेड़ रहे हो। समझ आ जाएगी कि रेप होता है, चाहे वो कोई भी हो। समझ आई? उसमें जातिवादी मत घुस। They'll tell you that caste system does not exist and is not even a thing. Then who oppressed people by labeling them as lower caste? They'll turn around and in the same breath say, ये जो caste वास्ट करते हैं ना, ये चूते होते हैं. So what is the truth? Because if casteism is not a thing, then how are people still practicing it? तो चूतिया कौन? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। Misogyny and anti-feminist propaganda. Honestly, I shouldn't be using words with more than 2 syllables in this video because in case these people or their followers watch it, उनको समझ में तो आना चाहिए. सारे जोक्स और इनकी सारी कॉमेडी ऐसी होती है। डोली सिंह और कुशा कपिला को लगता है कि एक्सेंट बदल कर सेक्सुअल ओरिएंटेड जोक्स मार दो, बस हो गई कॉमेडी। लड़की के मुंह से बूब्स और बहनचोद सुनना कौन पसंद नहीं करेगा? सबको हंसी आएगी, यही तो कॉमेडी है। बूब्स, बहनचोद। थैंक यू गाइस, आपको मेरी कॉमेडी बहुत पसंद आई। अगली बार धीका लोड़ा बोलूंगी। एक सुंदर इंडियन लड़की, वो भी इंडियन यूट्यूब पर वजाइना बोल रही है। ये साला कॉमेडी नहीं तो क्या है? इस पे नहीं हंसेंगे तो किस पे हंसेंगे? हम तो गांव के रंडवे बेबुद्धि के लड़के हैं, हमें तो यही चाहिए। सॉफ्ट पॉर्न के नाम यूट्यूब पे अपनी डेड सब्सक्राइबर बेस कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो, अगर तुम्हारे पास कैमरा है, माइक है और बूब्स हैं, आई मीन तुम लड़की हो, तो तुम इंडिया में यूट्यूब क्रिएटर बन सकती हो। मेरे को ना ये एक डंपर मिला मेरे को, उस डंपर में टकरा गया मैं, तो उस डंपर की वीडियो देखो एक बार तुम। मैंने किसी लड़की को बॉडी शेम करा, उसको डंपर बोला, तो भाई देखो यार मैंने डंपर बोल दिया। बट उनका पूरा अकेली दीदी नहीं है, ऐसी बहुत सारी दीदियां। इनका बहुत बड़ा ग्रुप है, फेमिनिस्ट का ग्रुप है, जहाँ भर भर के एंटी नेशनल बातें करती है, इंडिया को गाली देती है, हिंदूज को गाली देती है, दूसरी कंट्रीज की तारीफ करती है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ये इंडियन कल्चर को गाली देती है, हम हिंदूज को गाली देते हैं। But anyway, a lot of these people's content is laced with misogynist and anti-feminist propaganda. And Priyanka Chopra got a lot of backlash for her 2019 Grammys outfit. Lakshay made a video responding to everyone trolling her in the comments, and this would have been welcome if he didn't undo all of that by saying if she called herself a feminist and said it's her choice to wear this, that would have been wrong. विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। What? So everyone has the right to choose what they wear, but if it's a feminist, suddenly freedom of choice and expression don't exist. नहीं। सबको उस बवासीर वीडियो के बारे में पता है जो एल्विश ने बनाया था टू रोस्ट फेमिनिस्ट. कहाँ बवासीर बना दिए हो? Which then got him dragged and owned by Kusha Kapila when she shut him down. Honestly, all his video did was expose him for being the incel he is. In that video, he not only tries to discredit feminism, which he absolutely knows nothing about because that would require him to read, which would then require him to have more than 2 functioning brain cells, which he clearly does not, or he wouldn't make such shitty and cringe content on YouTube. In the name of roasting, he also body shames and slut shames women in that video and makes fun of their appearance. This is someone who, apart from being homophobic and transphobic, clearly fears strong women and women who assert their agency. Classism. This one is not as subtle as the others, but definitely prevalent. These YouTubers love to make fun of
poor people and portray being poor is something that is absolutely terrible. Like, these people legitimately use the words Garib and make comments on people's financial conditions as an insult. It is evident that most people who used or made TikToks are not as financially well-to-do as these cis-het upper caste YouTubers. Throughout the entire TikTok versus YouTubers ordeal, these people constantly punch down on TikTok creators, not for their content, but for their clothes, their hair, their appearance, or things that are directly related to their financial condition. क्योंकि मिस्त्री टाइप जो ऑडियंस है, जो रिक्शा वाली ऑडियंस है, वो बेसिकली सॉफ्ट पॉर्न देखना ही पसंद करती है यूट्यूब। ऑडियंस की बात ही कुछ और है। टिकटॉक पे जो अनपढ़ ऑडियंस है ना भाई, अलग ही स्वाद है उनका। पंचर जोड़ने वाली ऑडियंस ना सिर्फ मुजरा देखती है, वो इंटरेक्टिव नहीं होती उसको। ये सारे मजदूर, मोची, मिस्त्री, रेड़े वाले, तेरी हिस्ट्री ढूंढने में आ गया ना भाई, तू कोई नाड़ी साफ करता मिला है। उसी कूड़ेदान में से मैं थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा करके लाया हूँ। मतलब मैंने वीडियो देखी तो भाई जो पन्नी चुग रहा था ना, उसकी जैसे शकल का लौंडा। मतलब मैंने इनके भाई है कोई SR के इसका, तो उसको मैंने बोला था कि इसकी शक्ल हमारे यहाँ पे जो पन्नी चुगते हैं उससे मिलती है। तो भाई मैंने क्या गलत बोल दिया यार, उसकी शक्ल पन्नी चुगने वाले से मिलती है तो मिलती, तो क्या पता इस बार मैंने पन्नी चुगने वाला कही, अगली बार कह दूं मैं तुम्हारी शक्ल कबाड़ी से मिलती है, तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है। वे बाल रहे हैं जो नाई धोरे जाकर कहे भैया बाल में रंग भर दिए, मिट्टी कलर कर दे, मिट्टी कलर 20-20 रुपए में बाल रंगवाते ना, जो ऐसे बाप दादा ने भी कमा रखा है और तुम्हारे बाप दादा ना कमा पाए तो तुम उसमें मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते। अपने पापा से जाके पूछ भाई कि पापा हम रेस में पीछे कैसे रह गए, हम क्यों ना कमा पाए। तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है तो Not everyone has the kind of money that you have by making brand deals on your god-awful cringy content, which is then consumed by an army of prepubescent incels in the making, the way I inhale biryani that my mom makes. Majoritarianism, traditions, and Islamophobia. Majoritarianism is a philosophy that states that a majority of the population is entitled to a certain degree of primacy in society. It's the idea that the numerical majority of a population should have the final say in determining the outcome of a decision. Like in all the clips where the YouTubers were saying that the LGBTQ people need to be in a separate nation because they're a threat to straight men. And they need to be dealt with accordingly for not following the way of the majority. The one striking feature of right-wing populism is making the majority believe that they are actually endangered because of the minority. These YouTubers follow the same line of thinking, with Elvish Yadav making an entire video about Hindu-phobic web series. एक नई वेब सीरीज या फिर एक नई मूवी रिलीज होती है जिसके अंदर से 50% ऑफ द मूवीज या फिर 50% ऑफ द वेब सीरीज होती है एंटी हिंदू। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई हमारा बॉलीवुड लेफ्ट लीनिंग है और बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा एंटी हिंदू ग्रुप है। वो कोई कह रहा था कि दीपिका पादुकोण को पाकिस्तान से 5 करोड़ रुपए मिले हैं JNU के एंटी नेशनल प्रोटेस्ट में जाने के। अच्छा सच बात है, किसी को बतानी नहीं है, चलो ठीक है नहीं बता रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके पढ़ ले। ये वेब सीरीज हिंदू फोबिक है, हमारे सेंटीमेंट हर्ट करे, बहन चो सीधा बॉयकॉट बोल दिया तो इनके साथ क्या हो जाएगा। पाल घर में जो साधु उसके साथ हुआ उसके ऊपर कुछ बोली नहीं बोली। As if Hinduphobia in India is even a real thing. Hind, it's not. I know I'm gonna have some dumbasses in my DM screaming at me that Hinduphobia is real and Hindu khatre mein hai. But here's the thing. Hinduphobia is as real as reverse racism, misandry, heterophobia, and pink unicorns on a rainbow. Not real at all. Why? Because the minority in each case does not hold enough structural or systemic power to adversely affect the majority. Even abroad, when Indians may experience xenophobia or discrimination, it'll be because of racism, not Hinduphobia. You think Karen in the US cares if I worship cows or enjoy beef curry? Nah, she's still gonna make that joke about me worshipping cows and call me a curry muncher in the same breath. And since Elvish and Lakshay are the kind of people who genuinely think Hindu khatre mein hai, they call out everyone who disrespects Indian traditions and culture with a dash of Islamophobia. उनकी वेब सीरीज में इतना लॉजिक होता है जितना ओवेसी की स्पीच में सेक्युलरिज्म। बट जब कोरोना इंडिया में आया, इंडिया चाइना की बॉर्डर पे डिस्प्यूट हुई, उसके बाद उन्होंने हमारा डेटा चुराया, मतलब बहुत ज्यादा हमारी लड़ाई भिड़ाई हुई चाइना के बारे में। उस टाइम पे आमिर भैया ने कुछ भी अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं दी। क्यों नहीं दी? वो अच्छा सॉरी, हाँ उसकी मूवी तो 1500 करोड़ रुपए का बिजनेस करके आई थी ना चाइना में। उसको तुम्हें क्या लगा मैं ये बोलूंगा कि सारा पैसा अंडरवर्ल्ड से आता है और दाऊद सारी फंडिंग करता है? अबे साढ़े पागल है, सच बोलने की थोड़ी है। महेश भट्ट का नाम सुना होगा, आलिया भट्ट का नाम सुना होगा, पर एक चीज इनके बारे में नहीं सुनेगी, वो ये है कि ये दोनों मुस्लिम्स हैं। जो आलिया भट्ट की मां है सोनिया राजदान, उससे शादी करने के लिए महेश भट्ट ने इस्लाम कबूल करा था, मतलब अपना धर्म छोड़ा था और इस्लाम कबूल करा था, पर बेचारे वापस कन्वर्ट होना भूल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाप मुस्लिम, माँ मुस्लिम, बेटी क्रिश्चियन तो होगी नहीं, बेटी भी मुस्लिम। यार कोई बात नहीं है, मुस्लिम कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे को ये नहीं पता चलता कि ये सारे नाम क्यों छुपाते हैं यार। और ये ऐसे अकेले लोग भी नहीं है जो मतलब ये काम करते हो। तब्बू हो गई, मधुबाला हो गई, और भी बहुत सारे लोग हैं, सब अपना रियल नाम छुपाते हैं, अपना धर्म छुपाते हैं। पर Now I'm not going to comment on their intention, but their impact, because impact is always much more important than intention. All these people have millions of subscribers on YouTube. When will I ever? And most of their subscribers are young, impressionable children, probably in their teens.
I strongly believe that the kind of things you're into, the kind of things you like, the kind of people you admire are all important in your teenagers, especially because they shape the core of your personality. Like, I loved Justin Bieber and One Direction when I was 13 years old, and now I'm mentally ill. That's a joke. I mean, I am mentally ill, but that's not because of white pop stars. Please don't cancel me. The maximum impact they had on me is give me trust issues with men and make me wary of white people. Except with Zayn. My man deserved better. And please, please, please don't come at me with this is dark humor. Bullshit. This is not dark humor. Take this from someone who's been making jokes about wanting to die since she was 12. If your jokes involve insulting people or parts of their identity and demeaning them for their sexuality, gender identity, or caste, or literally anything else that they have no control over, you're a shitty person. You're a shitty person who could use a slap upside your head, and you're not funny. That's all I have for you in this video. Thank you so much for tuning in. Now I'm gonna leave you with my favorite bigoted tweets from these people's profiles. Enjoy. I don't understand. I don't understand. I don't understand, bitch. Don't understand. I don't understand, bitch. I don't understand. I don't understand. I don't understand, bitch. Don't understand. I don't understand. I don't understand. I don't understand, bitch. Don't understand. I don't understand, bitch. Canta,